The nation awaits justice in the rape case of a 24-year-old law student in Kolkata, assaulted inside the premises of a college. Kolkata police has formed a 5-member special investigation team led by an assistant commissioner rank officer to probe this very case. India Today has in fact accessed the victim's medical reports, which say that abrasion mark was seen around her neck and a few marks on her breast. No laceration or foreign body has been noted, and the report has confirmed that the sexual assault cannot be ruled out. The victim lawyer has confirmed further details of the incident, saying the victim was cornered in the union room where she was molested before being raped. The accused then dragged her to the security guard's room and raped her brutally. He has also said that the main accused, Monojit Mishra, is so influential due to his political color. And remember that he is reportedly linked to the Trinamool Congress as well. He has been arrested along with the 2 current students and a security guard. The prime accused's father has now said that he is a first citizen of India, then a father. He has called for utmost punishment for his son if he is found guilty. প্রোডাকশনে ছিল ফুল টার্ম পিসি চেয়েছিল, ওটা এফআইআরে যেরকম অ্যালিগেশন সব দিক দিয়ে যেরকম ভাবে প্রচার করা হচ্ছে ওরকম কোনো ঘটনা নয়। ঘটনাটা একটা হচ্ছে এখানে একটা কলেজের ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্রকে মানে ইয়ে করে ইস্যু খাড়া করে একটা অ্যালিগেশন দিয়েছে, এটা সাহেব বিচার করে মঙ্গলবার পর্যন্ত পিসি দিয়ে। Now, even as the BJP, the TMC trade barbs over the Kolkata gang rape case, Mamata Banerjee's netas are busy tainting the traumatized survivor. After TMC MP Kalyan Banerjee, now TMC MLA Madan Mitra has shamed the 24-year-old survivor, saying the incident would never have happened if she hadn't gone to the crime scene in the first place. TMC MP Madan Mitra was quick enough to respond to the controversy, asserting that misogyny cuts across all party lines. She also said that the party condemns the remarks regardless of who makes them. Moa's remarks have triggered a storm within the Trinamool Congress. Now TMC MP Kalyan Banerjee has hit back, saying that his party lacks the intellect and the morality to understand his words. He has also asserted that he wishes to clearly distance himself from those who are encouraging or protecting such criminals within his party. कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. Another brutal rape case rocks Bengal, this time inside a Kolkata college. A TMC student leader is in custody, the opposition is fuming, and the state government faces tough questions once again. More on this in our next report. Take a look. 24 hours after the horrific details of the alleged gang rape in Bengal's South Calcutta Law College sent shockwaves across the nation, the case has now triggered a massive political war of words. At the center of the storm is this man, Monojit Mishra, a TMC student leader and a key accused in the case. His links with senior TMC leaders has added to the BJP's offensive against the state government. वहाँ पे हर कॉलेज में तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, टीएमसीपी का ही ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो वो जो मेन एक्यूज्ड है वो भी, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये भी, इसके साथ तो फोटोज भी है बहुत सारे नेताओं के। तो टीएमसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में ऐसे निक्सस बन चुका है, ऐसी चीजें हो रही। मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है
कि ये अपीसमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। ना तृणमूल के संपादिका है, सेक्रेटरी, तो ममता बनर्जी अपना पार्टी का महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो दूसरा महिला का आप क्या बात करते हैं। आज कलकत्ता शहर के अंदर एकदम बिजी इलाका में, वन ऑफ द पॉशेस्ट इलाका, वहां कॉलेज में 7:30 से रात का 11 बजे के अंदर लगातार उनको धर्षण किया गया। कहाँ था कॉलेज का अथॉरिटी, कहाँ था गवर्निंग बॉडी, कहाँ था सिक्योरिटी। The TMC is clearly on the back foot, having to defend allegations of shielding the culprit. What is making their case even worse are TMC leaders first shaming the victim. মহিলাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। কলেজের ভেতরে যদি করে, সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো আরে ভাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। যারা ঘুরছে, যাদের সঙ্গে ঘুরছে, তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে, কাদের সঙ্গে ঘুরছে না। And then openly batting for the accused. যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তার বিরুদ্ধে বিচার হবে। কখনোই আমরা কখনো কোনো অভিযুক্তকে আড়াল করতে চাই না। যদি দোষী না হয় তাহলে শুধুমাত্র মিডিয়া হাইপ আর মিথ্যে প্রচারের কারণে তাকে যেন দোষী না করা হয়। Even as the local police have arrested the fourth accused in the case, the security guard of the college, the National Commission for Women has now come forward and claimed that they are being denied access to the gang rape survivor. This is really unfortunate कि after such a heinous crime, the commission member is located in Kolkata and she is desperately trying to get contacts, her address, contact numbers, everything from police, which is not yet been served to us. To Calcutta National Medical College Hospital, where her medical was not done. It is 72 hours crossed. And yesterday they said that she will go to Kolkata Medical College. There she was not sent there. All this has led to the BJP terming it as state-sponsored brutality and demanding Mamata Banerjee's resignation. बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर हम सब बहुत पीड़ा में हैं और मुझे लगता है ममता जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। With rising crimes against women, the political war in Bengal is only deepening while the demand for justice grows louder. Bureau Report, India Today.